ओके रिकॉर्डिंग टा ऑन नथिला सो मते जाना नथला आपण माने जेबे भी क्लास स्टार्ट हो गोटे थर मते मने पके दे जदी भी केबे भूली थी मु रिकॉर्डिंग ऑन कर देबी मते एडमिन को पकर मैसेज आसला तापर मु जानली ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल गंगा प्लेन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल गंगा प्लेन्स हां मिडिल गंगा प्लेन्स रे आपणकर एठी मिडिल गंगा प्लेन्स रे आपण एठी इजीली जानि परथिबे कि आर जो ईस्टर्न बाउंड्री रहइबो ईस्टर्न बाउंड्री सॉरी जो वेस्टर्न बाउंड्री रहइबो सेटा रहइबो अपर गंगा प्लेन्स रो राइट मिडिल गंगा प्लेन आउ साउथ रे सिमिलर पेनिनसुला प्लेटू रहइबो ओके आ नॉर्दर्न पार्ट रे हिमालयस रहइबो ओके सो दिस इज इट्स बाउंड्री आउ वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न पार्ट रे आपनकर लोअर गंगा प्लेन्स रहइबो गोटे जिनस जेतले एग्जाम रे लेट्स से कि क्वेश्चन आसी कि ओनली नॉर्दर्न प्लेन्स आसी देन even then also you cannot write all these things जदि खाली गंगा प्लेन्स पचारछि then you might write कि its boundary is this okay otherwise जदि भाबंतु खाली पचारछि कि जदि खाली जदि नॉर्दर्न प्लेन्स पचारछि तो आपण कोन करिवे नॉर्दर्न प्लेन्स आपण सब लिखिबे okay अपन डायरेक्ट कोन करिवे it is divided the ganga plains it is divided into upper ganga plain the upper ganga plain is divided into Rohilkhand and Awadh and the middle Ganga plain is divided into this and lower Ganga plain करके आपण सार देबे नहले टाइम हबनी किंतु जदी भाबंतु खाली गंगा प्लेन्स देइछि then what you can do you can just give the entire the total boundary the extreme boundaries of it माने टोटल गंगा प्लेन रो बाउंड्री दे देबे एक्जेक्टली सबु अपर गंगा प्लेन रो या बाउंड्री मिडिल गंगा प्लेन रो या बाउंड्री लोअर गंगा प्लेन रो या बाउंड्री सेटा लिखिया दरकार नै डायरेक्ट लिखि देबे कि स्ट्रेच फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ठीक अछि सेमति करी कि लिखि देबे तो मु कहूची सो दैट आपण सेतरो टिके नॉलेज गेन करिवे बट एते दरकार नै ओके सो हमर मिडिल गंगा प्लेन रो हमें बाउंड्री जानि गले सो जो मिडिल गंगा प्लेन अछि इट इज जो मिडिल गंगा प्लेन अछि इट इज ड्रेन्ड बाय घाघरा गंडक कोसी okay these are some of the out river hela middle ganga plain re apanko sun river okay sun river also flows through the middle ganga plain okay so ghagra gandak kosi these form the largest part this jo ghagra gandak kosi re basin achi this forms the largest part of the plain okay so this is also divided into dwabs माने एठी कोन द्वाब रे डिवाइड हो जाई छि जेमति कि बिटवीन घाघरा एंड गंडक एंड कोसी सेमति कोन छि द्वाब रे हमरो मिडिल गंगा प्लेन्स डिवाइड करा है छि ओके एंड अनदर थिंग हियर वी फाइंड course change of the river and the most notorious river is Kosi okay the most notorious river is Kosi ता संगे रे बहुत sediments धरि के आसे आ कोन करे sediments deposit करे तो course change काहे की हुए generally कोन होबो let's say a river is flowing from a hill or from a mountain जेतल से प्लेन को आसीबो से कोन करिवो तार जो sediments आस्तिबो से obviously deposit करिवो राइट तो deposit करिवो तो तापर कोन होबो river रो course change हे जिवो कारण river एटु फ्लो करि परिबोनी it is obstructed by this sediment so what the river will do it will change its course so now let's say earlier this was the channel of the river okay तो एठी द चैनल था तो लोक कोन करिवे ओके दिस इज द रिवर सो लोक कोन करिवे रिवर चैनल पाखा पाखी तांको सेटलमेंट्स करिवे ओके तांको सेटलमेंट्स करिवे रिवर बैंक्स रे ए एरिया रे बट एबे कोन हला रिवर जदि आसीला एठी रिवर कोन कला ता सेडिमेंट्स डिपॉजिट करिया स्टार्ट करला ओके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करिया स्टार्ट करला तो रिवर सेडिमेंट एठी डिपॉजिट कला तापर रिवर कोन करिवो
river will change its course because it cannot flow through this part. So what will do? It will flow through this area and this settlements will be flooded. Okay, so that's why Kosi is also known as the sorrow of Bihar. Okay, Kosi is also known as the sorrow of Bihar because it is known for frequently changing its course. Okay, I guess this is clear. And this middle Ganga plains is divided into two parts. The northern part is known as the Mithila and southern part is known as the Magad. जदि मन रखा कष्ट हम एमती मन रखिपारे कि नॉर्दर्न पार्ट इज हैविंग अ बॉर्डर विथ नेपाल राइट आउ मिथिला सीता सेठू थिले मिथिलारू जनक थिले से नेपाल राजा थिले तो सेमती आपण मन रखि परिवे कि नॉर्दर्न पार्ट has its boundary with Nepal, so it would be Mithila. जदि कंफ्यूज हबे कि मिथिला कोठी मगध कोठी तो एमती करी के आपण मन रखि परिवे. Okay, and another thing, this Magad plain, it also has somewhat coarser sediments than that of Mithila. Reason kono? Anyone? Because ମୁଁ କହିଥିଲି सोन रिवर जो अच्छी सी भी मिडिल गंगा प्लेन को कंट्रीब्यूट करे राइट. तो सोन रिवर आपण देखंतु कोठु बाहरियो पेनिनसुला ठीक अछि. जे पेनिनसुला बाहरी कि से बेसी बाट फ्लो करि ही नथिबो. सो the sediments that is deposited by the Sun River, it leads to coarser sediments. Okay, सेति पई किछि पार्ट रे हमकु coarser sediments भी मिले मगध. Okay, I hope middle Ganga plain is clear. आगु को मूव करिया. Yes, sir. Yes, sir. Last, this is the lower Ganga plain. जो lower Ganga plain अछि, it is found in parts of Bihar and West Bengal. Okay, it is found in parts of Bihar and West Bengal. Mainly ए दुटा स्टेट रे मिलुछि. ए जो लोअर गंगा प्लेन अछि, its width becomes bit narrow. देखो जी 80 गोटे सेकंड. Okay, you can see here in this part ए पार्ट रे ए पाखरे हम प्लेन रो जो विड्थ अछि एटी टिके नैरो हो जाउछि. तळु को आसी पुनी टिके वाइड होउछि बट ए पाखरे विड्थ ता हमर टिके अनम्यूट कर दियंतु जार भी माइक ऑन अछि. तो एटी हमर विड्थ कोन होउछि नैरो हो जाउछि राइट. एटी हमर राजमहल हिल्स अछि झारखंड रे ए पाखरे हमर राजमहल हिल्स अछि. तो सेही पाखरे आसी के हमर कोन होउछि गंगा रो जो width अछि सॉरी गंगा प्लेन्स रो जो width अछि लोअर गंगा प्लेन्स रो it becomes a bit narrow. Okay, and further this Ganga sediments, it flows, the Ganga flows through अपन जानथिबे जो राजमहल gap, जानथिबे राजमहल gap. Okay, it will flow through that and that's why the sediments becomes narrow here and finally the Ganga will flow into Bangladesh. Okay, finally the Ganga will flow into Bangladesh and the Ganga plain along with the Brahmaputra plain, okay, they will make the Sundarban delta here. They will make the Sundarban delta here. Okay, they will make the Sundarban delta. So this was out it mangroves bhi mile. Okay, but that you can avoid writing here. Okay, so what you need to write here is it is present in
Bihar and West Bengal. Okay, it has its boundary. It has its boundary with Darjeeling. Okay, here you will find that it has its boundary with Darjeeling, and it also borders the Bangladesh. Okay, it also borders the Bangladesh, and finally it forms the Sundarban Delta along with the Brahmaputra plains. Fine. So I'm just writing here so that you can refer to it later. It has boundary with Darjeeling Himalayas and narrows where near the Rajmahal Hills and forms the Sundarban Delta. Okay, so this is what you need to write if you are writing the Ganga plains. Divide it into 3 parts and write the main points. ठीक है, अपन point wise लिखिदेले आपनकर कोन हबो टाइम बंची जीवो short रे point wise लिखिदेबे. Okay, so this was the third part of your northern plains. The first part was the Rajasthan plains, second part was your Punjab Haryana plains, third part uh, is your Ganga plain, and now we'll be discussing the fourth part, that is the Brahmaputra plains. Okay, so the Brahmaputra plains are also known as Assam plains. Okay, see here the Brahmaputra plains are also known as the Assam plains, and it borders the eastern Himalayas. आमे पढ़ितले एठी कि जो पूर्वांचल रे, राइट, पूर्वांचल रे हमर पटकाई बम नागा हिल्स ए पाखरे, अरुणाचल रे पटकाई बम, देन नागा हिल्स, आमे सब पढ़ितले, राइट. तो it has its eastern boundaries with the Patkai Bum Naga Hills, that is the eastern Himalayas or the Purvanchal. Okay, in the south it has its boundary with Garo, Khasi, Jaintia. South रे एठी आपन गारो खासी जयंतिया अछि द मेघालय प्लेटू. ओके, साउथ रे गारो खासी जयंतिया संगे तारो बॉर्डर अछि. आउ वेस्ट रे, वेस्ट एंड साउथ रे सीए बाउंड्री फॉर्म करछि विथ सॉरी साउथ वेस्ट रे सेटा बाउंड्री फॉर्म करछि विथ बांग्लादेश. ओके, बाउंड्री फॉर्म करछि विथ बांग्लादेश. सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ योर ब्रह्मपुत्र प्लेन. वेस्ट रे आपनकर रहउछि पूर्वांचल, साउथ रे मेघालय प्लेटू, साउथ वेस्ट रे आपनकर रहउछि बांग्लादेश. It is bordering the Bangladesh, and north obviously the Himalayas. Okay, so this is the boundary of the Brahmaputra plain, and Brahmaputra plain is also the Brahmaputra river is also known for its course change. Okay, so there is frequent course change because it brings lots of sediment along with it. It brings lots of sediments along with it. Another thing, Brahmaputra plain is also known as your Assam plains. Why it is known as Assam plains? Because it almost covers the state of Assam. Hence, it is also known as Assam plains. It also covers some part of Arunachal Pradesh, but mainly it covers the state of Assam. Hence, it is also known as your Assam plains. ଆଉ ଯଦି ତାର longitudinal extent ଆମେ ଦେଖିବା, longitudinal extent ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଟା extend କରୁଛି from the syntaxial bend. ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ Himalayas north east रे sudden bend ନିଏ, right? Himalayas ଯେମିତି ଆସିକି ଏଠି north east ରେ sudden bend ନିଏ, right? ଏଇ जो bend ଅଛି ଆମର ସେଇ bend ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର plains form ହଉଛି. Okay, ଏଇ जो syntaxial bend ଅଛି ଏଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର plain form ହବ till Dhubri. This part here you have Dhubri. This part here you have Dhubri.
Okay, that is Dhubli ra border achi Bangladesh samre. Okay, so the extent is from the syntaxal bend of Himalayas till the Dhubli. Okay, so this is your Brahmaputra plain. And in the and uh, when you are writing about the Brahmaputra plain, you need to write, when you are writing about Brahmaputra plain, you need to write about the coast chain. Au gote jinso apan koi paribe ki in the Brahmaputra plain lies the Majuli island. Okay, Majuli island bisare bhi ete likhi dei paribe because it is famous, so it is not required, but I will suggest you to write this because it is famous, so the examiner will know, okay, this person also knows that in this plain there is an island also, Majuli Island, which he knows. Okay. Then it finally meets the Ganga in Bangladesh and it forms the Sundarban Delta. But the Brahmaputra जो सुंदरबन जो ब्रह्मपुत्र जो कंट्रीब्यूशन अच्छे सुंदरबन डेल्टा रे सेटा इंडिया रे फॉर्म हुए कारण ब्रह्मपुत्र डायरेक्ट बांग्लादेश को पड़े बट आमर गंगार जो फ्लोटा अच्छी सेटा इंडिया रे सुंदरबन डेल्टा को कंट्रीब्यूट करे. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर ब्रह्मपुत्र प्लेन. एंड जदि भाबंतु आपण मते लागुनी कि एथरे पॉइंट शॉर्ट हबो, जदि पॉइंट शॉर्ट होउची आपण मने पडुनी दि तीनटा जिंस मन रखंतु कि जेमति मेंडरिंग. ओके, ए रिवर्स मिएंडर करंती, ऑक्सबाउ लेक्स, ए रिवर ऑक्सबाउ लेक्स फॉर्म करंती. आउ कोन एज मु कहितली तराई रीजन अछि ए पाखरे, राइट? तो सब लिखि दे पारियो कि मार्सी लैंड्स. ओके, दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट्स. तो एई किछि किछि कॉमन पॉइंट्स आपन को लिखि दे पारियो जदि लागुची कि नाही मोर पॉइंट्स कमी जाउची कोन हला तो ए पॉइंट्स आपन लिखि दे पारियो. बट पॉइंट्स कम होबनी जदि जेतिकी एठी कुआ होची सेतिकी पॉइंट्स लिखिबे, इट विल बी enough for the answer. Okay. So that was all about your northern plains. Northern plains of significance kona? Sir, agriculture. Significance is agriculture and huge population. Okay, agriculture. As we have the plain, that's why as these are fertile lands, so we have intensive agriculture. We find intensive agriculture here. Okay, as well as agriculture is there, so what happens? Food processing industries. Food processing industries. Okay, but before that I just wanted to tell one thing, that is the population. Okay, it is just 1/4 of the land area of India. Okay, but it houses around 50% of the population of the country. Okay, 50% of the population of the country. UP khali world ro 136th population. Okay, mane means every one person out of 36% in the world is from UP. Okay, so this is the thing that you need to write also, that it houses around 50% of the people of the country. So that is the thing. And yes, when you are writing agriculture, then you can write it also helps in some industries, that is food processing industries. How kon hai paribo? This can be a separate point. Okay, मैं इटी लिखी देइछि, but this can be a separate point. The leather industries. Leather industry, okay, fine. But what is the how you relate the leather industry with plains? Sir, high grazing grounds for the cattle and what? Sir, availability of grazing lands and fodder for the cattle. Grazing land for the cattle. Okay, but if you see cattle's, ठीक अछि, grazing land अछि, cattle's nomads जैसे mountain रे रुहंती, hilly areas रे सेठी भी बहुत cattle रुहंती.
The Green Revolution state mostly in northern plains रे अछंती. How they contribute to food security of India. Okay, that will be a corollary point of this only agriculture point he ଆସିବ ସେଇଟା. Sir, ଆପଣ agriculture ହିଁ ଫୁଡ ଆହୁରି ସିକ୍ୟୁରିଟି କେତେଟା ଆପଣ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁ ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ. Sir, ସେ place ରେ infrastructure development ବେଶୀ ହଉଛି. କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି? Sir, infrastructure development ବେଶୀ ହଉଛି. Infrastructure, yes, that is a good point because here it is easy to develop roads infra as it is easy to develop or build roads, railways, etc. କାହିଁକି? କାରଣ ଏଟା ସେଡିମେଣ୍ଟ ଯାକ alluvial soil ଏଠି ଅଛି, so it is easy to work on these soils. Okay, rather than ଆପଣ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ ବିଲ୍ଡ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ରେ ବିଲ୍ଡ କରିବା କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ ରେ ବିଲ୍ଡ କରିବାଟା ଇଜି ହବ. Okay, what else? हाँ, गोटे जिनस ମୁଁ କହିପାରିବି लेदर इंडस्ट्री जी भी କହିଥିଲେ लेदर इंडस्ट्री गोटे जिनस कि लेदर इंडस्ट्री हैला वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो सेटा जदी आपण लिंक करिक लिखिबे, बट हाँ एते भी कंक्रीट पॉइंट नुहे, बट इफ यू वांट टू लिंक आपण लिख परिबे कि एठी एते रिवर्स अछि, सेति पई लेदर इंडस्ट्री भी एठी अछि, कारण वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री, सेटा लिखि परिबे. व्हाट एल्स? Due to the long stretches of river, it has high potential for inland navigation. Inland navigation, okay, fine. And the major reason not only because of rivers, कारण देखो हिमालय रे भी mountains रे भी rivers अछि, right? But सेठी अपन को inland navigation is not easy because due to the slope. Here the slope is more or less even, that's why inland navigation is easier here. Okay, आउ गोटे जिंस कि river banks रे हमर बहुत religious आउ pilgrimage centers अछि. Okay, so these are some of the significances that you can write. You can think more on it also. Okay, so eta thila amara northern plains ro kichi kichi significance. Okay, next will be moving to the peninsular plateau. Okay, we'll be moving to the peninsular plateau. ଆମେ northern mountains ଦେଖିଲେ, next ଆମେ northern plains ଦେଖିଲେ, now we'll be moving to peninsular plateau. ଆଉ the peninsular plateau जदि आपण देखिबे कि it is more or less of a triangular shape. Okay, it is more or less of a triangular shape, and आर बॉर्डर्स कोन जेतले आपण पेनिनसुलर प्लैट्यू लिखुछन्ती, बॉर्डर्स स्टार्टिंग रे लिखिबे, माने सब छोट छोट प्लैट्यू रो बॉर्डर्स लिखा दरकार नै, किंतु द borders of the entire peninsular plateau you need to write that is the northern border का संगे रहबो, obviously northern plain संगे रे, and in its eastern flank is the eastern ghats, in the western flank is the western ghats. And in the south it meets the Kanyakumari, right? In the south it meets the Kanyakumari. So this is the boundary of the peninsular plateau. Okay, आउ peninsular plateau रो जो northern part अछि, जो northern extension अछि, it extends from Kutch, ठीक अछि, it extends from Kutch and then it moves through Madhya Pradesh, that is the Vindhyan range, and the plateaus such as Malwa plateau, Bundelkhand plateau, सेपटू move करिकी एटू move करिवो, एटी move करिवो, then it will go somewhere, sorry, just a second.
it will move from Kutch, it will move up to Delhi, and from there it will move along with the parallel to the Ganga plains, sorry, the Yamuna plains, and finally it will go and end in the Rajmahal hills. Okay, आम छोटनागपुर प्लेट्यू पाखर भी आसीबा, but छोटनागपुर प्लेट्यू टा गोटे गैप हो जाइए from the main land. Okay, from the main peninsular plateau गोटे गैप हेकी अछि, but it is included in the peninsular plateau. But generally जो main land रो आपनकर northern boundaries अछि, it extends from Kutch, then moves to Delhi, then finally it ends at the Rajmahal hills. Okay, so this is your northern flank of the peninsular plateau. आउ वेस्टर्न रे आपण जानले, सॉरी ईस्टर्न रे जानले ईस्टर्न घाट्स, आ वेस्टर्न रे जानले कि वेस्टर्न घाट्स, राइट. The peninsular plateau, what are the borders? Northern plains, eastern ghats, western ghats, and finally converges with the Kanyakumari, right? The northern सर देखिए तो डाउट थिला सर. हाँ कुहंतु. सर मु कहते जे जेमति कि आ जो बॉर्डर थाला साउथ बॉर्डर तो नीलगिरी पकड़ तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मर जाई जाउछथि, तो ता पर को भी हमर प्लेटू टा एक्सटेंड कर. हाँ पेनिनसुला जो आपनकर जो नीली वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स आपनकर तीनटा कन्वर्ज होचंदी कर्नाटका केरला आउ तमिलनाडु बॉर्डर्स रे, राइट. सेठी कन्वर्ज होचंदी, बट फर्दर हमर जो पेनिनसुला प्लेट्यू इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड टू कन्याकुमारी, राइट. हमर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स सेटा जाई कि सेठी कन्वर्ज होची, बट इट इज फर्दर गेटिंग एक्सटेंडेड टिल कन्याकुमारी. हमर कन्याकुमारी टा भी पेनिनसुला प्लेट्यू रे ही आसुची. ओके, क्लियर? यस सर, थैंक यू. Okay. So this is the border. आउ जो northern border जो अच्छी extends from आपनकर Kutch, extends from your Kutch, then it will move to east of Aravalli. Just a second. Kutch, then move to east of Aravallis to Delhi, and finally end at Rajmahal Hills. Okay, so this is the northern extension. ठीक अछि. Then let's get into the individual plateaus. Let's discuss the individual plateaus. Okay, so जो individual plateau अछि एठी गोटे जिंस आपण देखिबे कि जो वेस्टर्न घाट्स अछि, वेस्टर्न घाट्स ऊपर को आपण आसीबे, एठी आपणकर अछि आरावलीज, राइट. आरावलीज अछि, तो हमर जो प्लेट्यूज अछि ए प्लेट्यू आपणकर स्टार्ट होउची कोठू, जस्ट आरावली रो ईस्ट टू. ओके, आरावली रो ईस्ट टू, आरावली रो ईस्ट रे आपणकर फर्स्ट आसीबो मारवार प्लेट्यू और मेवार प्लेट्यू. ओके, द मारवार प्लेट्यू और द मेवार प्लेट्यू. तो एठी जो मारवार की मेवार प्लेट्यू अछि, ए प्लेट्यू रे ए प्लेट्यू टा रे को बेसिन को रिवर फ्लो करची, मेनली आपणकर चंबल रिवर. ओके,
एठी आपनकर को रिवर फ्लो करची एठी आपनकर चंबल रिवर फ्लो करिवो आउ जस्ट अ सेकंड okay so अच्छा am I audible now just sorry yes ओके सो हमर फर्स्ट आसीबो मारवार प्लेटू रे के फ्लो करिवो चंबल रिवर ए प्लेटू रु फ्लो करे ओके देन यू विल सी द मालवा प्लेटू ओके मालवा प्लेटू आपनकर मारवार प्लेटू जो अछि तारो ठीक साउथ ईस्ट रे मालवा प्लेटू अछि आउ मालवा प्लेटू आपनकर इज डिपोजिटेड by it has deposition of basaltic lava okay एटी basaltic lava जो डेक्कन ट्राइब्स आपण जानछन्ती जो जेतो बळे इंडियन प्लेट मूव करथलाम काली कहितली एबे जोठी आपणकर रियूनियन आइलैंड अछि ता ऊपर जेतो बळे हमर इंडियन प्लेट मूव करथला सेतो बळे कोन हला सेठी volcanism हेतिला and due to that we have basaltic deposits in the Deccan region. So Malwa Plateau also has this basaltic deposits. Okay. मालवा प्लेटूटा आपणकर राजस्थान आउ एमपी रे लाई करे मालवा प्लेटूटा आपणकर पूरा राजस्थान रे लाई करे देन यू हैव द मध्य भारत प्लेटू ओके यू हैव योर मध्य भारत प्लेटू दिस मध्य भारत प्लेटू it has its border with Marwar Plateau on its west, Bundelkhand in its south east. ठीक अछि साउथ ईस्ट रे एटी बुंदेलखंड अछि आउ वेस्ट रे आपनकर मारवार अछि आउ मध्य भारत प्लेट्यू भी आपनकर जो चंबल रिवर अछि ओके जो चंबल रिवर अछि सेटा मध्य भारत प्लेट्यू रे भी चंबल रिवर फ्लो करे आउ एठी से कोन करे गोटे जिंस दैट इज you will find rolling plains here you will find rolling plains in Madhya Bharat Plateau can you say what is rolling plains rolling plains for example जो चंबल रिवर अछि ओके सो से रिवर जेतो बळे हमर मध्य भारत प्लेट्यू रु मूव करे रिवर जेतो बळे मध्य भारत प्लेट्यू रु मूव करे से कोन करे एठी किछि इरोजनल एक्टिविटी करे रिवर ओके बट there is just a second see when a river flows from an area it erodes that area and it forms valleys right river form valleys but when the capacity of the river is not too high mane bhabo river re speed outflow speed as well as the quantity of water is not that high what it will do it cannot cut the plains or plateaus into sorry the mountains or plateaus or hills into deep valleys तो सी कौन करियो फॉर एग्जांपल जदि भाबंती हिमालयन रिवर्स कौन करे एमती डीप वैलीज फॉर्म कर दबो राइट काटी किंतु एठी जो चंबल रिवर अछि से कौन करियो डीप वैलीज फॉर्म करि पारिबोनी ओके rather what it will do it will make shallow valleys here and it is also not valleys rather it will have some the plain will be undulated means टिके साइनियस वेव टाइप रो आपनकर फॉर्म हबो जो प्लेट्यू रो ऊपर आपन एमती
साइनस वेव टाइप रो फॉर्म होबा और डीप वैलीज हबनी. ओके, सो दैट इज नोन एज रोलिंग प्लेन्स. दीज आर नोन एज रोलिंग प्लेन्स. रोलिंग प्लेन्स आउ जो मध्य भारत प्लेट्यू अच्छी सेठी आपन को ये रोलिंग प्लेन्स देखिया को मिले बिकॉज चंबल्स इरोजनल एक्टिविटी इज नॉट दैट हाई और नॉट दैट डीप. दैट्स व्हाई यू फाइंड रोलिंग प्लेन्स इन मध्य भारत. ओके, दैट्स व्हाई दिस मध्य भारत एज वेल एज बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रे भी सेम प्रॉब्लम अछि. बुंदेलखंड रे भी कोन हुए रोलिंग प्लेन्स आपन को देखिया को मिले. बुंदेलखंड एंड मध्य भारत, these two parts, okay, these two parts, they have rolling plains. They have rolling plains, also known as badland topography. ए नाटा सुनी चंदी badland topography. Yes, sir. badland topography थिले कोनटा प्रॉब्लम कोन होवे. एग्रीकल्चर ही पारिबनी बिकॉज दैट लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. एते ऊपर तळ हेकी थिबो से लैंड को लेवल करके एग्रीकल्चर करिया बहुत कष्ट. सेति पई दैट इज आल्सो रीजन बुंदेलखंड रे चलो वर्षा हुएनी. That is a reason, but due to this badland topography also it is difficult to cultivate these lands. Okay, so we started from the northern plateaus or the central highland. We started from the Marwar plateau. Marwar रे चंबल फ्लो करछि सेटा हमें जानले, राइट. तापरे मालवा प्लेट्यू देखिले. मालवा प्लेट्यू रे मु कोन कहली कि एटा लावा डिपोजिट्स अछि एठी. सो लावा डिपोजिट्स अछि ता माने एठी कोन को सॉइल मिलिवो जदी लावा डिपोजिट्स अछि. Black You need soil. to connect this. Yes, black soil. से सब जिंस आपण कनेक्ट करिवे. जस्ट अ सेकंड. तो एठी कोन मिलिवो आपनकर ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल मिलले कोन होबो. Sir, Cotton cultivation. cultivation. Okay, so this Malwa plateau is can sustain cotton cultivation. Okay, you can cultivate cotton here as you have the regular soil here. तापरे ता ईस्ट को जेतळे आमे आसीबा और नॉर्थ ईस्ट rather north east will find the Madhya Bharat plateau, and to the east of Madhya Bharat plateau you have your Bundelkhand. Okay, so Bundelkhand re जो बुंदेलखंड अछि it lies just to the south of the Yamuna river. Okay, Bundelkhand lies just south of the Yamuna river and it is flanked by Madhya Bharat, Malwa plateau, the Vindhyan range and Yamuna river in its north. ठीक अछि, एटा आपनकर असला लास्ट को बुंदेलखंड. Then further when you go further east you will find Bagelkhand. Okay, you will find Bagelkhand. It is located in Madhya Pradesh itself. Okay, after Bagelkhand you have your Hazaribagh. देखो जेतबेले आपन को प्लेट्यू ऊपर आपन लिखिबे, if question comes only on plateaus ता परे भी जदि खाली पेनिनसुला प्लेट्यू आसला आपन सब जाक केबे भी आ विषय रे लिखि परिबे. ओके, सो मेन फॉर एग्जांपल मालवा प्लेट्यू विषय टिके लिख देबे कि हां चलंतु एठी आपनकर बेसाल्टिक लावा अछि. बुंदेलखंड इज फेमस, so you can write Bundelkhand. It lies in UP as well as in MP, and as I said you can write ता बाउंड्रीज लिखि देबे आउ कि एठी रोलिंग प्लेन्स देखिया को मिले, राइट. You should write that. Then just mention Bagelkhand and then move to the Chotnagpur plateau. Okay, just mention Bagelkhand and then move to the Chotnagpur plateau. The Chotnagpur plateau here you can see here it's the Chotnagpur. Sorry. See here you can see the Chotnagpur plateau. The Chotnagpur plateau को स्टेट रे अछि. It is in Jharkhand, छत्तीसगढ़, ओडिशा
West Bengal, and some parts of Bihar also, and some parts of Odisha, and some parts of Bihar also. Okay, so this is the region that Chotnagpur Plateau is located in. ଆଉ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁର ନର୍ଥ ରୁ ସନ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋ କରେ. ଓକେ, ସୋ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁର ନର୍ଥ ରୁ ସନ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋ କରେ, and other rivers that flow through Sun River, and other rivers that flow through the Chotnagpur Plateau are the Damodar, North Koel, South Koel, Subarna Rekha, out Chotnagpur Plateau south ru, the southern part of Chotnagpur Plateau ko river flow way, that is the Mahanadi. Okay, so these are some of the rivers that flow through the Chotnagpur Plateau. Why it is famous for Chotnagpur Plateau? Famous kahingi? Sir, mines and metallurgical industries. Yes, coal fields and mines. Okay, so it is famous for those things. The Chotnagpur Plateau, you can see here, it is also divided into two parts, or you can see the northern part of the Chotnagpur Plateau lies the Hazaribagh Plateau, and to the south lies the Ranchi Plateau. Okay, आरो जो नॉर्थ पार्ट रे आपनकर हजारीबाग प्लेट्यू अछि और साउथ पार्ट रे आपनकर रांची प्लेट्यू अछि. ओके, so northern part of it is known as your Hazaribagh, and the southern part is your Ranchi Plateau. Now, this Chotnagpur Plateau अछि, this is the eastern most part of the Peninsula Plateau in the mainland. Mainland रे एटा आपनकर eastern most part. मु काई कहूची mainland रे एटा आपनकर eastern most part, because you also have your extension of the Peninsula Plateau in the Meghalaya region, okay, or which is also known as the Shillong Plateau. So this Chotnagpur Plateau, this Chotnagpur Plateau is separated from the Meghalayan Plateau, the Meghalayan Plateau by the Rajmahal Garo Gap. Okay, by the Rajmahal Garo Gap. एठी आपणकर एठी गोटे फॉल्टिंग हेतिला, आ ए फॉल्टिंग रु गैप फॉर्म हे जाइतला, जोठु की आपणकर छोटनागपुर प्लेट्यू वाज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटनागपुर प्लेट्यू वाज सेपरेटेड फ्रॉम द शिलोंग और द मेघालय प्लेट्यू. ओके, क्लियर? ए पार्ट क्लियर अछि समस्तंकर? Yes, sir. I know I am going bit fast, but we need to go fast. नॉलेज सॉरी बनी सेति पई आ ए पार्ट बहुत जिंस अछि कहया आ लिखिया पई भी एग्जाम रे आपन बहुत जिंस मिलिवो. सो एमिति हबन कि कंटेंट कोडी शॉर्ट हे जिवो. ओके, कंटेंट कोडी शॉर्ट हबनी, बहुत जिंस मिलिवो, बट द थिंग इज वी नीड टू मूव वेरी फास्ट, especially in the plateau region. Okay, so next let's move to the Meghalaya plateau. The Meghalaya plateau ta jemni कहली, it is an extension of our peninsular plateau, right? It is an extension of our peninsular plateau, and this plateau
has three parts. Okay, this plateau has three parts. That is the Garo, Khasi, and Jaintia. The western part is known as Garo, Khasi, and Jaintia. Okay, this plateau is divided into three parts: Garo, Khasi, and Jaintia, and it is separated from the main block by the Rajmahal and Garo gap. Okay, so this was your northern part of your peninsular plateau. Okay, this was your northern part of the peninsular plateau. Now we'll be discussing about the Deccan plateau. Okay, we'll be discussing about the Deccan plateau, which is the southern part of your peninsular plateau. So just a second. The southern part of your peninsular plateau is your Deccan plateau. Okay, so the Deccan plateau, it is the largest area. It is the largest area of your plateau region. Okay, or sorry, largest area of the peninsular region, and it has its northern boundary with it makes its northern boundary with the Satpura range here, the Satpura range and the Vindhyan range, and it it is divided into three parts. That is the Maharashtra plateau, the Karnataka plateau, the Telangana plateau. Sorry, four parts: Telangana plateau and the Chhattisgarh plain. Okay, it is divided into this four parts. So the Maharashtra plateau, here you will find basaltic rocks. In the Maharashtra plateau, you will basaltic rocks and lava deposits, for obvious reasons that we have already discussed, right? And this plateau is drained by some of the rivers that are Godavari, Krishna, Bhima, etc. These are some of the main rivers that drain this plateau. Okay, then you have the Karnataka plateau. Okay, the Karnataka plateau, it is dissected into two parts. Okay, it is dissected into two parts, and one part is known as your Medan, and another part is known as your Malnad. Okay, one part is known as Medan and another part is known as Malnad. So what is Malnad? See, Nad, as you know, Tamil Nadu. Nad means country. Okay, and Nadu, Tamil Nadu means the country of Tamils. Okay, Tamil Nadu. Similarly, Malnad here refers to hill country. Okay, Malnad here refers to hill country. Why? Because এই region रे ଆମର କଣ ଅଛି, hills ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, means the mountains have, the heights of the mountains are somewhat more. but जो मैदान ଅଛି, मैदान रे କଣ ଅଛି, मैदान is nothing but your rolling plains. मैदान is nothing but your rolling plains. So what are the major rivers that pass through this region? The major rivers are Tungabhadra, okay, the major river is Tungabhadra, Kaveri. These are some of the major rivers. Okay, and এই region रे ଆପଣଙ୍କର ବାବା ବୁଦାନ hills ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ. It is famous. Baba Budan Hills is famous. So I am writing that name. Baba Budan Hills. ଆପଣଙ୍କର Baba Budan Hills Karnataka plateau ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ. Okay, in this region. So that was about your Karnataka plateau. Okay, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି, ଆପଣ ମାନେ ରନିଂ ନୋଟ୍ସ ନଉଛନ୍ତି କି? No, sir. Yes. ନଉନାହାନ୍ତି. ଓକେ, ତ କ୍ଲାସ ପରେ କଣ ଏ ପିଡିଏଫ କୁ ହିଁ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି?
यस सर कारण एथिरे बहुत सारा मैप आपण करछन ना तो रनिंग कोड वाला मैप सहित हम कला आडकू के ओके डिफिकल्ट फाइन होची फाइन फाइन ताले एठी मु लेखिला आपण मानन को कंफ्यूजन हो राइट ओके जस्ट अ सेकंड देन do you want me to write it in a blank page कि सेटा मैनेज करि परिवे ए सर हाँ पार्ट सर मैनेज है जो okay fine then and the last not last but the second last is your Telangana plateau okay Telangana plateau এই রিজিয়নটা আপন দেখন্তু এই রিজিয়নটা this region just a second this region is your Telangana plateau okay jodi ebe Telangana ache that's the region and it is drained by three rivers and you know the names of the rivers that is your Godavari Krishna and Penneru okay Godavari Krishna and Penneru so these are your three main rivers that drains the Telangana plateau then last is your Chhattisgarh plain okay this part okay this is your Chhattisgarh plain and it lies between the Maikal range ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ border ରେ ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ Maikal range ଅଛି it lies between the Maikal range and the hills of Odisha okay so and this is drained by the Mahanadi this is drained by your Mahanadi okay so this is your Chhattisgarh plain and this whole makes your Deccan plateau तो चारटा पार्ट हम Deccan plateau रे पढ़ले go to the Maharashtra plateau then you have your Karnataka plateau then Telangana plateau then the Chhattisgarh plains okay these are the four uh, parts of your Deccan plateau okay तो एबे मु आउ नेक्स्ट मैप आपन देखौनी because एबे मु हिल रेंजेस आपन से डिस्कस करिवि आउ हिल रेंजेस आई नो यू मस्ट बी नोइंग कि आरावली को माने एटलीस्ट गोटे छोट नॉलेज थिबो कि आरावली को अछि वेस्टर्न घाट्स कोडी अछि ईस्टर्न घाट्स कोडी अछि तो सेति पे मु कोन करिवि एबे आपन संगे आउ मैप शेयर करनी डायरेक्ट मु पढै पढै सेठी लेखुची so that it will be easy for me as well as for you to means for you because you can refer it after the class and for me because I do not have to sift to pages again and again okay just a second ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି because the reason is କିଛି ଗୋଟେ medical emergency ଚାଲିଛି ଏବେ ଘରେ but that is I'm not giving an excuse but ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ disturbance ହଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ mute କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମତେ ତ ସେଥିପାଇଁ please ଟିକେ ଆଜି accommodate this problem of mine so next we have our hill ranges of the peninsular region. So let's first discuss about the Aravalli. Aravalli. So Aravalli, आपण जानिचंती कोड स्टार्ट हुआ Aravalli? सर राजस्थान भी सेमती पैरेलल ठीक अछि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डिरेक्शन राइट स्टार्ट कोड हुआ राजस्थान सर राजस्थान रे टोटल अछि बट आई थिंक गुजरात रो भी स्टार्ट हे जाय नहीं नॉर्थ रे कोड स्टार्ट होती राजस्थान रो हाँ आई थिंक यस okay yes the orientation of the mountain is from northeast to southwest right
from northeast to southwest, and এটা কোডু স্টার্ট হচ্ছে, এটা স্টার্ট হয়ে দিল্লি রু, ওকে, নট ফ্রম রাজস্থান, এটা দিল্লি রু স্টার্ট हुए and extends second part अपन ठीक कहले, it extends till Gujarat, okay, it extends till Gujarat ঠিক আছে। গুজরাট রে পালনপুর ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଯାଏ extend করে ଆରାବଲି। ଆଉ ଆରାବଲି is actually it is a remnant of one of the oldest mountain, ମାନେ ଆଗରୁ it is said that there was a mountain of similar height of that of Himalayas. Once Aravalli, the height of Aravallis were similar to that of the Himalayas. ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଟା extent ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା from Haridwar right from Haridwar, but gradually this mountain was eroded and now it is found in Delhi. और the height भी ଏବେ बहुत कम ही जाए, ठीक है। so it is remnant of old fold mountain, okay, it is a remnant of one of the old fold mountain and our highest peak kono Aravalli ro highest, what is the highest peak of Aravalli? What is the Mount highest Abu. peak of Aravalli? Mount Guru Sikha. Abu. actually Guru Shikhar ta Mount Abu re achi, is the highest peak and it is situated in Mount Abu, okay। so Mount Abu exactly bhul hobani, kintu it is more specific would be Guru Shikhar it is the highest peak, okay, you know this। so ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଧରେ ଆଉ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନସୁନ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ନାଉ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅଛି କି ଟୁ ରାଇଟ୍, ଓକେ। you can write ଯଦି ଖାଲି ଆରାବଲି ବିଷୟରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବେ କି rivers ବହୁତ origin ହୁଏ to such as ଲୁନି, ସାବରମତୀ etc, okay, ଏସବୁ Aravalli ରୁ origin ହୁଏ। it acts as an water divide it acts as an water divide as well as climatic divide, okay, ଆପଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆରାବଲି ରେ ଲେଖି ପାରିବେ। now let's go to Vindhyan range। okay, so Vindhyan is an escarpment, right? Vindhyan mountains are escarpment kono, it is formed by faulting, right? this is a block mountain or formed by faulting, right? এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାର ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି Vindhyan ର faulting ରୁ ହେଇଛି? Vindhyan, Satpura ଆଉ ମଝିରେ if you know that, let's say this is your Vindhyan, just a second, let's say this is your Vindhyan, this is your Satpura, এটা ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟା, এটা Satpura, ଏଠି କୋଉ ରିଭର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି? ନର୍ମଦା, ଏଠି ନର୍ମଦା ଫ୍ଲୋ ହଉଛି and this is a fault mountain। fault mountain means faulting କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ you have a weak zone, when the rocks move through a weak zone, ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସନ ହଉଥିବ, କମ୍ପ୍ରେସନ ହେଇକି ଏଇଠି ଏ ଏରିଆରେ କଣ ହେଇଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ କଣ ହବ? ତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ 1 and part 2 ଏମାନେ କଣ ହେଲେ? ଉପରକୁ ମୁଭ କରିଗଲେ, ଓକେ, ସେମାନେ ଉପରକୁ ମୁଭ କଲେ and they rose as block mountains okay, they rose as block mountains and here you got a valley, ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି horst and graben topography। ଏଟାକୁ horst ବି, this is horst and this is graben topography, ঠিক ଅଛି। so
So विंध्यान आपनकर गोटे faulting रू फॉर्म हेची and the Narmada Valley and the Narmada River flows between the Vindhyan and the Satpura, right? Vindhya और Satpura मझिरे आपनकर नर्मदा फ्लो करछि, right? What is the general elevation of Vindhyan mountains? General elevation is from around 300 to 600 meters. Okay, 300 to 600 meters पाखापाखि अंकर elevation अछि. And another thing is, what is the extension? What is the extension of the Vindhyan mountains? The extension of the Vindhyan mountain is from the borders of Madhya Pradesh and Rajasthan. Borders of Madhya Pradesh and Rajasthan को पाखरे एटा जोबाट कोई गोटे जगह अछि मध्य प्रदेश रे जोटा कि सॉरी नॉट राजस्थान, गुजरात. जोबाट कोई गोटे जगह अछि जोटा कि आपनकर मध्य प्रदेश आ गुजरात रो बॉर्डर रे अछि. सेइठु नै कि टू बिहार. बिहार रे गोटे जगह अछि सासाराम कहि कि. ओके, it is extended to its extension is from this Jobat to Sasaram. Okay, and this mountain extends eastwards as Kaimur Hills. गोटे सेकंड देखो जे आपन Kaimur Hills. ए मैप रे देखिनी. Let me see the other map. Okay, एठी भी देखिनी. Okay, Kaimur Hills is somewhere here. एटा आपनकर विंध्यान आसला, and this is your Chhattisgarh. एठी आपनकर मध्य प्रदेश अछि. Yes, somewhere this part. Okay, you will find the Kaimur Hills. ठीक अछि. So आपनकर जत बळे ये विंध्यान रो ईस्टर्न एक्सटेंशन को हमें जानिचो as the name of Kaimur Hills. ठीक अछि. And the Vindhyan gives rise to tributaries of some of the it gives rise to tributaries of Ganga and Yamuna, such as the Chambal, Betwa, Ken, etc. Okay, these rivers origin from the Vindhyan range. Highest peak kona? What is the highest peak? Sadbhavana peak. Yes. सद्भावना पीक और गुडविल पीक. इंग्लिश हिंदी नाटा सद्भावना एंड इंग्लिश नाटा गुडविल पीक. जोटा भी देखिले चलिबो. Okay, so this was about your Vindhyan range. Then south of Vindhyan, what is there? The Satpura range. The Satpura range lies south of Vindhyan and जेमते जानिले कि north of Satpura flows the Narmada in north, and south रे को river Tapi. Okay, Satpura north रे Narmada flow करछि आउ Satpura south रे Tapi flow करछि. So it is lying between Narmada and Tapi. Okay, some of the hills that are there here are Rajpipla,
Mahadev, Maikala range, etc. Highest peak कौन? Satpura रा Dhubgarh is the highest peak. Okay, so this is all about your Satpura. Then we have our Western Ghats. Okay, Western Ghats. Western Ghats कोडू start होची? गुजरात रू हाँ गुजरात रू exactly एग्जाम रे देखिया पे अपन कौन लिखिबे कि extends from south of Tapi. ठीक अछि, south of Tapi को जाए फ्लो करछि to the sorry not flow करछि extend करछि to the north of Kanyakumari. To the north of Kanyakumari. Okay, this is the extension of Western Ghats. Just a second. This is the extension of your Western Ghats. अपन north रे तापी तार boundary form करछि और south रे till Kanyakumari. And alignment of this mountain is, we know that it's north to south direction, right? It is north to south direction. And what are the some of the important peaks here? Annaimudi. Okay, that is the highest peak, right? It is the highest peak located in Tamil Nadu. नहीं Okay, okay, located in Kerala. आउ Tamil Nadu रे भी गोटे important peak अछि, famous peak. ता ना कोन जोटा की second highest, ता ना कोन डोडा बेटा Tamil Nadu रे. ठीक अछि. Similarly, you have some important peaks in Maharashtra also, such as Kalsubai. This is the highest peak. This is the second highest peak. Okay, in Maharashtra you have Kalsubai as the highest peak. Okay, then we have our Eastern Ghats. Eastern Ghats. So Eastern Ghat को to extend करছে राजमंदिर extend करছে ओडिसा रे नहीं नहीं मुकले राजमहल हिल्स रो अच्छा राजमहल हिल्स ओके नहीं राजमहल हिल्स रो आपण राजमहल हिल्स रो सेपट को आपनकर जो गंगा प्लेन अछि सेठी तो कोलकाता अछि राइट तो सेठी नुए तारो आउ टिके तळु ओके तारो आउ टिके तळु एग्जैक्टली हमर महानदी पाखरु स्टार्ट होची ओके महानदी इन ओडिसा सेठू ओके महानदी इन ओडिसा टू गोटे डाउट से जो ईस्ट सिंहभूम जो झारखंड रे अछि तो सेटा को पार्ट रे जो ईस्ट सिंहभूम आ केउंझर जोड़ा एबड़ा सिंहभूम आपनकर छोटनागपुर प्लेटू रे जाउची ओके ओके तो एटा तो छोटनागपुर प्लेटू ओके ईस्टर्न घाट से जीवनी ओके अंडरस्टूड हाँ छोटनागपुर प्लेटूटा ईस्टर्न घाट्स नहीं सेटा हम अलगा पढ़िले ना आपनकर जो सेंट्रल हाईलैंड्स रे सेटा हम अलगा की पढ़िले यस कंफ्यूज ओके हाँ तो वाईगई फ्रॉम एक्सटेंड्स फ्रॉम महानदी टू वाईगई इन तमिलनाडु वाईगई रिवर अछि तमिलनाडु रे से जाय व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स
देवमाली नहीं देवमाली महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी यस बहुत जगह रे मु किसी किसी जगह रे पढ़ी छी कि देवमाली लिखा है बट इट्स महेंद्रगिरी okay Mahendragiri is the highest peak and some of the important ranges here are Nalamala Palkonda Sevaroy okay these are some of the important ranges of Eastern Ghats okay ଆଉ Eastern Ghats ଆଉ Western Ghats ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ difference ହେଲା कि Eastern Ghat is highly dissected why because of the east flowing rivers yes because of the east flowing rivers जो rivers जाको वेस्टर्न घाट रो ओरिजिन करछन्ती से माने ईस्टर्न घाट्स को काटी के जाई कि हमरो बे ऑफ बंगाल रे पडुचन्ती राइट सो दैट इज व्हाई यू हैव हाईली dissected the highly dissected eastern ghats ठीक अछि and it meets Nilgiri hills on the borders of Tamil Nadu Karnataka and Kerala okay so this was all about your eastern ghats हमें कौन कौन देखिले फर्स्ट हमें फिजियोग्राफी रे नॉर्दर्न माउंटेन्स देखिले तापरे नॉर्दर्न प्लेन्स देखिले तापरे पेनिनसुलर प्लेट्यू देखिले ओके आउ दीटा जिंस कोन रहइला गोटे रहइला आपनकर कोस्टल प्लेन्स आउ गोटे रहइला आइलैंड्स ओके सो मु जानि छी प्लेट्यू पार्ट ता बहुत फास्ट पढेली बट द थिंग इज जदि पेनिनसुलर प्लेट्यू कि डेक्कन प्लेट्यू ऊपर आसीबो मु जति जिंस कहि छी सेति जिंस एनफ मन ताटो अधिक लिखि भी पारियोनी एग्जाम टाइम भी हबनी ठीक है जदि खाली वेस्टर्न घाट्स भी आसला 6-7 पॉइंट्स इजीली बाहर जिवो आपण आउरी जेतल रिवर्स रो किछि कहबी ता संगे आपण वेस्टर्न घाट्स को रिलेट करि परिबे जेतल रिवर्स रो कहबी ता संगे आपण ईस्टर्न घाट्स को भी रिलेट करि परिबे ओके सो दिस सॉरी दिस आइलैंड पार्ट this you will do by yourself ठीक अछि दीटा आइलैंड अछि गोटे हला अंडमान एंड निकोबार आ गोटे हला हमर लक्षद्वीप ठीक अछि सो दिस टू आइलैंड यू विल बी डूइंग बाय योरसेल्फ कोस्टल प्लेन्स को मु कोन करबी आपन को आज गोटे असाइनमेंट देबी आज और बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल बी गिविंग यू वन असाइनमेंट ओके सो से असाइनमेंट रे मु कोन करबी गोटे कोस्टल प्लेन्स रो किसी देबी एज वेल एज रिवर्स रो देबी केन देखो रिवर्स हमर प्रीलिम्स पे दरकार ना मेंस पे दरकार तो एथरो से पचारिबेनी कि एटा कोड बाहरला सेटा कोड बाहरला सेमि तो नहीं आपन को रिवर्स जानिवार अछि ओवरऑल राइट सो मु कोन करबी रिवर्स रो आ कोस्टल प्लेन्स रो किछि आपन को असाइनमेंट दे देबी एंड you will be doing that assignment if you need help of internet or something or books you can take that after that in the next class what I will do जेतले आपने जेटा असाइनमेंट करि देबे तापरे जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट ता थिबो सेटा मु कोन करिम नेक्स्ट क्लास रे I will deal with this topic for half an hour okay I will deal with these two topics for half an hour and सेथरे कोन हबो आपण मेंस पई टॉपिक्स भी कवर हबो प्लस आपण कांसेप्ट भी जाथिबो क्लियर हे जो किंतु एबे हम जदी पढै भी कोन हबो सेही पार्ट ता बहुत अधिक टाइम लागि दिबो ओके ए दीटा को पार्ट बहुत इंटर रिलेटेड टिके अछि तो बहुत अधिक पार्ट लागि अधिक टाइम लागि दिबो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस नाउ आई विल टीच दिस आफ्टर you complete those assignment in the next class okay clear ए दीटा पार्ट कोन करिया सेटा क्लियर हेबे yes sir okay
सर ताले तीनटा को माने असाइनमेंट रहयो ना आइलैंड और कोस्टल प्लेन्स और रिवर्स नहीं आइलैंड टा अपन निजे आइलैंड किछि नाही आइलैंड छोट टॉपिक दीटा अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप ठीक अछि मु आपन को आइलैंड रो भी दे देबे असाइनमेंट ओके फाइन तो आइलैंड टा अपन निजे कर देबे मु कहथली आ आर मु स्पेसिफिक आपन को असाइनमेंट दे कोस्टल प्लेन्स और रिवर्स रो ଆପଣ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରିକି ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର କିଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକସ କରିବି ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରେଇବି କ୍ଲିୟର ଏବେ यस ओके फाइन सो ସେଇଥିରେ ଆମର କଣ ହବ फिजियोग्राफी भी कंप्लीट होला माने असाइनमेंट पर पूरा कंप्लीट हबो और रिवर्स भी ସେଇଥିରେ ही हबो माने रिवर्स रे मु एटा कहबिनी कि गंगा एटू बाहरला सेठी गला सेया गला बट ओवरऑल रिवर्स ऊपर मेंस रो जा क्वेश्चन नै परियो मु सेटा कहबी सेटा जो क्वेश्चन गंगा एटू बाहरला सेटू हैला ता चैनल ता बेसिन सेटा प्रिलिम्स रो पार्ट मेंस रे से फैक्चुअल क्वेश्चन आसेनी तो मु आपनको मेंस ओरिएंटेड जा रिवर्स ऊपर हबो तार असाइनमेंट देबी और नेक्स्ट क्लास एटा डिस्कस करबी सो ताले हम ଏବେ नेक्स्ट टॉपिक को जिबा द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटोलॉजी रे monsoon okay the next topic is climatology and in climatology you have your monsoon ठीक अछि before teaching monsoon or before discussing monsoon I will be discussing some part of world geography with you so that you can make a better sense of what I am teaching in monsoon right so किंतु सेही पार्ट टिके हम ट्राई करिया जल्दी करिया कारण हम monsoon रे हमरो बेसी टाइम so first thing do you people know about pressure belts pressure belts विषय जानछन्ती यस सर तो कौन प्रेशर बेल्ट सर इक्वेटर पाखरे लो प्रेशर बेल्ट ओके then subtropical high pressure belt then subpolar low pressure then polar high pressure ओके फाइन सो हमर जो प्रेशर बेल्ट रे कौन हुए फर्स्ट जो इक्वेटर रे हमर कौन हुए एठी लो प्रेशर बेल्ट हुए राइट इक्वेटर हमर लो प्रेशर हुए इक्वेटर लो प्रेशर काई हुए ऑब्वियसली ड्यू टू हाई इंसोलेशन राइट ड्यू टू हाई इंसोलेशन एटी सन ओवरहेड बेसी टाइम पे हुए और जो एज ओवरहेड बेसी टाइम पे हुए तो कौन हुए जो डायरेक्ट रेज आसे हमर इक्वेटर ऊपर बहुत अधिक आसे जो डायरेक्ट रेज आसे हमर कौन हुए इक्वेटर ऊपर बहुत अधिक आसे एटा समझते क्लियर एटा मते लागुची समझ जानि दिबे कि हमर इक्वेटर ऊपर इंसोलेशन बहुत अधिक हुए बिकॉज़ सन डायरेक्टली ओवरहेड बेसी टाइम सेठी रुहे इज इट क्लियर माने एटा समझ जानि चंदे राइट एथरे के डाउट अछि कार प्लीज रिप्लाई माने डाउट अछि कि नाही नो सर ओके तो इन्सुलेशन रेट सबुठ अधिक हम इन्सुलेशन हेले कौन हम जो इन्सुलेशन हम एठी जो एयर थिबो राइट एठी जो एयर थिबो से एयर कौन हम माने এই एरिया रे जो एयर थिबो से एयर कौन हम हीट हाउ माने हीट हे जिवो ओके एयर विल गेट हीटेड अप जेतळे एयर गुडा हीट हे जिवो तो कौन हम लाइट हे जिवो आमे जानि छे जेतळे गोटे जिंस गरम हम से लाइट हे जिवो ओके heat when it gets heated up it will become lighter as it becomes lighter what will happen it will rise up right आगे कौन हम सनलाइट पड़ला गरम हे गला लाइटर हे गला तापरे ऊपर को कन्वेक्शन थ्रू रे it will rise up तो सेति में ए एरिया रे कौन हुए लो प्रेशर फॉर्म हे राइट जेतबळे एठी एयर रो प्रेशर अधिका थांदा एठी हाई प्रेशर हेतांदा लेकिन गरम पे कोन होची एयर गुडा राइज कर जाउची एठी लो प्रेशर होची एटा समस्त क्लियर सेही एयर जाई कि मु एबे ट्राई सेल्युलर सर्कुलेशन आपन पढाई परिबिनी टाइम पे किंतु सेही एयर जाई कि कोन हबो एठी हमर एटा हमर जस्ट अ सेकंड दिस इज आवर 30 डिग्रीज
and this is our 0 degrees, and this is 60 degrees, and this is our pole. Okay, so say air kon hobo upare upru rise karibo and it will descend in the 30 degrees. So say 30 degrees re amar kon hoye high pressure form hobe. Okay, ता आगु को हम जाने दरकार नहीं, किंतु एठी कोन होबो आपनकर लो प्रेशर होबो आ एठी हमरा हाई प्रेशर थाए. ओके, माने मानसून पई ता आगु को जानिया पे दरकार नहीं. तो एटा हम जनरली जानि छ. जस्ट थिंक खराटा सब जो सनलाइट जो इन्सोलेशन सबुठु अधिका एठी हे नथांदा, बट लेट्स से 30 डिग्रीज रे हेतांदा. लेट्स से सबुठु अधिका इन्सोलेशन 30 डिग्रीज रे हेतांदा. तो मते कोंतु लो प्रेशर टा इक्वेटर रे हेतांदा कि 30 डिग्रीज रे हेतांदा. एबे कोन कहली कि हमर जो इन्सोलेशन होउची, इन्सोलेशन हाईएस्ट हम जानि छी इक्वेटर रे, राइट. आ सेति पई इक्वेटर कोन होउची लो प्रेशर होउची. लेट्स से जस्ट इमेजिन कि 0 डिग्री रे हमरो कि इक्वेटर हमरो सबुठु अधिका इन्सुलेशन होउनी अर्थ सरफेस रे. 30 डिग्रीज रे सबुठु अधिका इन्सुलेशन होउची. ताहाले हमरो लो प्रेशर टा कोडी फॉर्म होबो 30 डिग्री रे 30 डिग्रीज रे फॉर्म होबो, राइट. आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ इट कि जोठी अधिका सबुठु गरम होबो, जोठी अधिका खरा होबो, सेठी हमरो सबुठु अधिका सेठी हमरो सबुठु लो प्रेशर अधिका सेठी हो, माने सबुठु कम प्रेशर सेठी रहबो, लो प्रेशर सेठी हो. एटा समस्त क्लियर आई गेस. ओके, सो नाउ टेल मी वन थिंग. जतो बळे गोटे जगह रे जतो बळे लेट्स से एटा हमर 0 डिग्री आ एठी हमर सबुठु अधिका लो प्रेशर अछि. तो जो विंड रो मूवमेंट हुए सेटा कोठु कोडे हुए, हाई प्रेशर रु लो प्रेशर कि लो प्रेशर रु हाई प्रेशर? high pressure to low pressure. High pressure to low pressure. ता माने I can say that if there is a low pressure at equator, then the wind will blow from high pressure, that is from 30 degrees to 0 degrees. Yes or no? Yes, sir. These are our winds. Okay, these are our winds. तो ये wind टा कोठु हबो high pressure रु move करिवो to 0 degree, that is our low pressure. Okay, so here the wind is moving from high pressure to low pressure, that is from 30 to 0. अब ये wind को wind कहते? ट्रेड winds, right? एटा समस्या जानि चंदे, एति की बाटा समस्या जानिले कोन मु कहूची. Yes, sir. ओके, तो हमें दीटा जिंस जानले. गोटे जिंस हमें जानले कि 30 रु 0 जोटा जाउची हमर गोटे जाउची ट्रेड winds. आ गोटे हमें जानले प्रेशर बेल्ट विषय रे. प्रेशर बेल्ट विषय कोन जानले कि जोटे अधिका गरम होची सेठी लो प्रेशर हबो. आउ सेही रीजन रो मु ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन पढाई देनी, किंतु मु खाली कहि देली कि सेठू जो एयर टा कन्वेक्शन है कि ऊपर जीव अपर एटमॉस्फेयर रे, इट विल मूव टू द 30 डिग्रीज एंड इट विल डिसेंड देयर, एंड एट 30 डिग्रीज देयर विल बी हाई प्रेशर. मु एति की जिंस आपन कहि. ओके, फाइन. ए जो जोन टा को हमें आईटीसीजेड भी कहू. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज नोन एज आईटीसीजेड? Sir, it stands for intertropical convergence zone because Yes, very this good. is where easterly trade winds converge. It converges. Yes, the name is, the full form is intertropical convergence zone. From the name itself, you can guess what it's trying to denote. See, from the tropics, from both the tropics, intertropic. This is one tropic. This is the second tropic. Okay, so from intertropic, from both the tropics, the air is converging here. Okay, so this zone is known as intertropical convergence zone. Clear? Eta samajhte clear? कि दी tas high pressure ru air asi सेठी converge होती, सेठी पई हमें एटा को intertropical convergence zone कहू. Clear एटा समझते? yes Okay, sir. okay. Next, I would a concept मैं आपको कहबी एबे, that is land breeze and sea breeze.
लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आई गेस एटा भी समस्त जानी थे बट शॉर्ट रे कहि दूची this is our, let's say, this is our land and this is our ocean or sea, whatever you might call it. ଯେତେବେଳେ so okay କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କହିପାରିବେ land bridge ଟା ଆଉ sea bridge ଟା anyone Land bridge is like କୁହନ୍ତୁ bridge that flows from the land to the sea during the daytime because land gets it very fast due to insulation in daytime. And sea bridge is the reverse where the water like the water is warmer in the night time and the land breeze goes from the sea towards the land. ओके आपण कहउचंदी ठीक किंतु जो मूवमेंट ऑफ विंड टा टिके भूल कहउचंदी इन द डे टाइम हमर लैंड कोन हबो बहुत अधिक हीट हे जिवो राइट डे टाइम रे हमर लैंड बहुत अधिक हीट हे जिवो जब लैंड बहुत अधिक हीट हे जिवो ताले कोन हबो जस्ट सेही थॉट प्रोसेस टा को चलान अधिक हीट हले कोन हबो एठी जो एयर मॉलिक्यूल्स थिबे से माने कोन सेटा हेबे हिट अप एक ऊपर पड़ेबो देन ताको यस कंपेंसेट करे पे सी ब्रिज अछि एग्जैक्टली यस सेटा हीट हे जो हीट हले कोन हबो से माने एक्सपैंड करि जिवे एक्सपैंड करले कोन हबो से माने लाइट हे जिवे लाइट हले कोन हबो दे विल राइज अप जेतबे ए एरिया रु पळेबे एठी कोन हबो लो प्रेशर हबो यस और नो एठी लो प्रेशर हे गला अबिका काई की एठी लो प्रेशर होला कारण जो एयर मॉलिक्यूल जी एठी प्रेशर पकोउतले से माने ऊपर पळेले राइट सो एठी लो प्रेशर हे गला अबिया जेतले एठी लो प्रेशर हे गला ताले कोन हबो आउ एठी कोन अछि हमर सी अछि सी रे कोन हबो हमें जानचे लैंड जल्दी हिट हुए आउ पानी टा लेट रे हिट हुए सो एज सी गेट्स heated up later than land एठी कोन हबो रिलेटिवली एठी हमर हाई प्रेशर थिबो राइट कारण ये कम गरम हेतिबो ओके ये कम गरम हेतिबो सो व्हाट विल हैपन द wind will flow from the wind will flow from the sea to the land in the daytime eta daytime रे हबो okay now let's come to the night time okay night time को आसिया night time रे कोन हबो just a second नाइट टाइम रे कोन हबो नाइट टाइम रे हमर जो लैंड अछि ओके लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर as well as it loses heat fast ओके सो दिनर कोन होला जतले गरम जतले खरा पडुतला जल्दी गरम हे गला राति जतले खरा पडनी ये कोन करियो से जो हीट टाको बहुत जल्दी रेडिएट कर दबो ऊपर राइट तो कोन हबो लैंड राति टाइम रे ड्यूरिंग द नाइट व्हाट विल हैपन it will become cool faster than the sea sea रे कोन हबो रिलेटिवली sea टा हॉट थिबो राइट ताले एबे कोन हबो आपनकर जो विंड टा एटी डेंसिटी सॉरी एटी आपनकर हाई प्रेशर हबो बिकॉज़ इट इज रिलेटिवली कूलर एंड एज इट इज रिलेटिवली हॉटर एटी कोन हबो आपनकर लो प्रेशर हबो right so the wind will move from the land to the sea and it is known as land breeze wind ame sabu bele origin ru na diya hue for example if it is coming from the land it is land breeze and if it is coming from the sea it is sea breeze joti origin seta ra na niye how it is universally applicable ko bhi wind semiti hi na diya hue okay ए concept बुझा होला समस्त को ए जो land breeze sea breeze concept टा clear everyone Yes, sir. okay fine so एति के हमकु जानिया दरकार थिला फॉर आवर मॉनसून ठीक अछि मु आपन को एबे कोन कोन कहली गोटे कहली रिगार्ड दैट इज द प्रेशर बेल्ट्स देन द ट्रेड विंड्स देन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ओके सो ओके आ गोटे छोट जिनसटा कहूची जदि भाबंतु फॉर एग्जांपल लेट एटी गोटे सर्कल करछि लेट्स से ए एरियाटा लेट्स से ए एरियाटा बहुत अधिक हीट अछि ओके आउ किंतु रिलेटिवली ए जो एरियाटा एडजेसेंट टू इट ए एरियाटा एटा कूल अछि ओके ओके हीट टाको रेड कर दोजे बुझा जाय अछि एटा हीटेड अछि आ एटा कूल अछि किंतु लेट्स से दिस इज ए
दिस इज बी आउ एठी आउ गोटे पार्ट अछि जोटा सी एठी आउ गोटे पार्ट अछि दैट इज सी ओके କିଛି ଶୁଭା ହଉନି। Sir, not audible, sir. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir, no. Okay, fine. लास्ट कौनटा सुनी थिले लास्ट कौनटा कही थिले सर से ग्रीन सर्कल रो थ्रू कही जाए ओके फाइन ठीक अछि सर स्क्रीन शेयर है ओके जस्ट अ सेकंड okay so now is it visible यस सर Yes, sir. okay तो ई सर्कल टा देखंदो एबे जोटा हम करछि ठीक अछि लेट्स से this is your equator okay but let's say due to some reasons ए रीजन रे बहुत अधिका इंसोलेशन हेची कि बहुत अधिका हीटेड अछि से रीजन लेट्स से इट इज समथिंग अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस किंतु ए रीजन टा सेते गरम नाही इट इज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस किंतु ए रीजन टा 30 डिग्री सेल्सियस अछि तो एबे हमर जो आइसो बार्स फॉर्म होबो से आइसो बार जोटा फॉर्म होबो सेटा केमते जीवो सेटा एमती फ्लो करिवो यस और नो
बुझा जाउची मु कोन कहूची एबे बिकॉज आइसोबार कोन जो जगार प्रेशर सेम थिबो से जगह को कनेक्ट करे राइट इट कनेक्ट्स प्रेशर्स विथ सिमिलर प्रेशर और इक्वल प्रेशर राइट तो आइसोबार टा ए टाइप रो हबो कारण एठी कोन अछि कम टेंपरेचर अछि कम टेंपरेचर अछि माने प्रेशर अधिका थिबो किंतु एठी प्रेशर कोन थिबो कम थिबो 30 डिग्री 30 डिग्री अछि तो प्रेशर सेम थिबो ए रीजन रे क्लियर एटा am I audible to everyone Yes, sir. এটা ক্লিয়ার হলা না ক্লিয়ার হউনি আইসোবার জানছন্তি that are the line that is the line that connects places having equal pressure right সেটা জানিছন্তি তো এଠି কোন হলা এଠି हमर 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি ଅଛି এটি কোন হবো যাহা প্রেসার রহিবো ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରେସର ସେମ ହିଁ ରହିବ ତ ଆଇସୋବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ତ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେ ଜୋନ କୁ କନେକ୍ଟ କରିବ yes or no Yes, sir. Yes. ବୁଝା ଯାଉନି ଏ ପାର୍ଟ ଟା ବୁଝା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ Yes, sir. ओके फाइन बस मुझे सेतिकी कहया था ओके सो we discussed about something regarding trade winds pressure belts some changes in this isobar land breeze and sea breeze okay so now let's move to our topic that is monsoon so can anyone tell me what is monsoon Sir, is seasonal yes tell seasonal wind. seasonal wind okay fine seasonal wind Sir, seasonal reversal of wind या कहते, but there is seasonal no reversal of wind yes that is more accurate ठीक अछि आ monsoon हमें काहे की पढुचे कोन पढुचे सेटा हमें जे सिग्निफिकेंस पढिया सेतले हमें जानि जिबा ओके बट monsoon is very important our economy and based on it our agri means our agriculture is totally mostly dependent on monsoon as well as government policies pisciculture etc सब monsoon ऊपर dependent जदि agriculture खाली dependent भी हला that means around 18% of the economy खाली मैं agriculture कहूची आउरी impact अच्छी monsoon रे खाली agriculture भी जदि हला around 18% of the economy is dependent on monsoon right सेति पे हमें monsoon पे बहुत important आउ हमर खाली इंडियन ज्योग्राफी अछि तो monsoon रु क्वेश्चन आसियार चांसेस बहुत अधिक ओके so as you said monsoon is a seasonal reversal of wind seasonal reversal of winds okay actually जो word monsoon टा एटा गोटे अरेबिक वर्ड रो आछि that is mosim okay mosim means season and monsoon means seasonal reversal of wind why seasonal reversal of wind because you will see let's say this is India during the summers you will see that the monsoon that approaches India approaches from southwest direction ठीक अछि जो monsoon winds India को आसे सेटा southwest direction में आसे okay but in winters you will see that these winds get reversed and it flows in a northeast the winds are northeast this wind comes from northeast okay so
this is the seasonal reversal, okay, that we are talking about. Okay, so jodi asibo monsoon and you need to write an introduction, what will you write? Monsoon are nothing but a seasonal reversal of wind where the wind flows in a where the winds are southwesterly in summers and northeasterly in winters. Okay, so this is the definition that you need to write about monsoon. आमे एटा पढिबा काहे कि रिवर्स हला कोन हला सेटा आमे पढिबा बट एतिकी जो इंट्रोडक्शन हम कहली समझ बुझा हला एटा. Yes. Okay, fine. So now look into this diagram. So जेतले monsoon होतला monsoon सब जगह हुए नहीं वर्ल्ड किछि किछि जगह रही हुए such as in the Somalian region, Mexican region, Australia रे, India रे, India in the sense South Asia and Southeast Asia and some parts of South Asia and Southeast Asia. तो से जगह हुए तो लोगों को बुझाना था कि खाली ए जगह रे काहे की होउची. Okay, so then many theorists, meteorologists, they tried to find out the reason of tried to find out the reason of monsoon. Okay, so the first person was Halley. Okay, the first person who gave a theory regarding monsoon was Halley. Okay, so what did Halley say? Halley said that monsoon does से देखिले कि अरे ओके गोटे दिन से देखिले कि अरे जो हम समर अछि समर रे कोन होची विंटर एमती आछी from the sea towards the land. जो विंटर होची विंटर रे कोन होची विंटर आछी from the land to the sea. Okay. So he his theory is known as classical theory. Okay, his known theory on monsoon is known as classical theory of Halley. Classical theory of Halley. He said that okay, this monsoon is nothing but just a sea breeze and land breeze in a regional context or a larger area. It is nothing but a sea breeze and land breeze. ଆମର sea breeze land breeze रे कोन होतला ଆମେ ଏବେ पढिले कि राति रे दिन टाइम रे sea breeze आस्तला राति टाइम रे land breeze जाउतला due to temperature differences. He said that as in summer this land is getting heated up, summer रे कोन होची land टा अधिका heat हे जाउची. That's why the wind is moving from the sea. Sea रे कोन होबा relatively just relate it to the land breeze and sea breeze concept that we discussed earlier. land breeze रे कोन होतला दिन टाइम रे land टा heat हे जाउतला आउ आपनकर जो ओशन थिला सी थिला से रिलेटिवली कूल रहउतला सेति पे कोन होतला डे टाइम रे एठी लो प्रेशर होतला आउ एठी हाई प्रेशर होतला. Hence the wind was moving from the high pressure to low pressure zone, from the sea to the land. He said that in the summers we see that this Asian landmass it is getting heated up आउ एठी जो sea अछि से relatively cool रहउची. Hence the sea has a high pressure and the wind is moving from the sea to the land and it is just a sea breeze but in a larger space, larger area. And in the winter it is reversing because winter कोन होबो land बहुत जल्दी cool हे जिवो, right? winter कोन होबो land बहुत जल्दी cool हे जिवो आउ ocean सेते जल्दी cool हबनी, sea सेते जल्दी heat lose करि परिबनी. Hence land will be cooler in the winters and the wind will flow from the land to the sea and that is nothing but your land breeze during winter. Okay. এটা বুঝা হলা Halley কোন কইলে? Everyone, is it clear?
Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Is it clear? Hali कौन कहले? Yes. Okay, so this was the concept given by Halley, but there was a problem. But there was a problem with this. People said, okay, you are saying that this is land breeze, sea breeze, everything is fine, but eta co area, this is the equator, ITCZ data, this is the equator, means this is 0 degrees, right? एठी को विंड फ्लो करे हमें एबे पढिथिले 30 रु 0 को विंड फ्लो करे Right. ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज ना ईस्टर्लीज ट्रेड विंड वेस्टर्ली ना ईस्टर्ली ईस्टर्ली okay. So some of his critics said that a area from 30 to 0 we see that we have easterlies, sorry, black we have easterlies generally, but here the winds are westerlies. How come it is possible? And Halley could not explain this. Halley जिन को explain कर पार लेंगे, okay? And this confusion was solved by another person whose name was Dr. Flon. Okay, so Fon said that Fon gave a concept regarding the shifting of pressure belts, to explain why these winds are westerlies. Okay, so let's see the diagram again. Flon कहले कि okay, I would a concept everyone knows about Coriolis force. Coriolis force कौन जानते? Yes, sir. What is it? Sir, It is an yes. Sir, due to Coriolis force, माने northern equator, northern hemisphere is a rightward move करू. Okay. And southern hemisphere is leftward. Okay. Coriolis force is an apparent force which deflects moving objects to its right in the northern hemisphere and to its left in the southern hemisphere. Okay. एबे पई आपण खाली एतिक जानंतु जो माने भी maybe if you are not clear with it, एबे एतिक खाली जानंतु Coriolis force गोटे फोर्स जोटा कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को नॉर्थ रे राइट को डिफ्लेक्ट करे आउ साउथ रे माने सदर्न हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करे. ओके, सेती कांसेप्ट एबे खाली मन रखथांदु. तो डॉक्टर फॉन कोन कहले कि द एशियन लैंड मास देखंतु ए जो लैंड मास ता हमर अछि एठी ए जो लैंड मास ता ओके एटा गोटे बहुत बड़ लैंड मास ऊपर पूरा यूरेशिया लैंड मास गोटा ऊपर पूरा रशिया अछि तळे इंडिया साउथ ईस्ट एशिया गोटे बहुत बड़ लैंड मास. तो फॉन कहले कि जेतो बेले हमर समर रे कोन होची कि ए जो एठी कोन लैंड अछि एठी कोन अछि ओशन अछि राइट. मते गोटे कथा कहंतु समर रे एई दीटा पार्ट रु बेसी गरम कोटा हबो? समर रे एई दीटा पार्ट रु लैंड राइट लैंड बेसी गरम हबो. तो एठी अफ्रीका रे देखंतु अफ्रीका रे इक्वेटर रे हमर लैंड मास अछि राइट. अफ्रीका रे इक्वेटर लैंड मास अछि किंतु ता पर कोन अछि हम पाखरे पूरा ओशन अछि एठी पूरा ओशन अछि. तो ओशन कोन हबो? ओशन रिलेटिवली लैंड टू कूल रहइबो. ता माने मु आपन जो कांसेप्ट ता कहितली सेठी कि
जो प्रेशर आइसोबार एठी आउ एठी सेम रहिबेन आइसोबार एठी सेम रहिबेन काहे दिस इज बिट कूलर एंड दिस इज हॉटर राइट तो कौन हला एठी देखंतु हमर एठी हमर अधिका गरम अछि आइसोबार्स एठी आसला बट एज द ओशन इज कूलर ए आइसोबार कौन हला एबे ए आइसोबार विल सर्च फॉर सच अ रीजन व्हिच इज hotter or which has similar temperature as this region तो एठू कौन हला देखो ए जो डॉटेड लाइंस देखो ए डॉटेड लाइंस धीरे 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 कौन हला ऊपर को मूव कला व्हाई बिकॉज़ द लैंड हियर इज हैज द सिमिलर टेम्परेचर as that of the equatorial region of Africa एठी एते अधिका लैंड मास अछि आ लैंड हमें जानि छै कि अधिका हीट एब्जॉर्ब करे तो सेति पई एठी कोन हला ए जो लैंड मास ता बहुत अधिका हीट हेकी थिला सेति पई हमरो एठी अफ्रीका रे इक्वेटर रे हमको जो टेम्परेचर मिलु थिला सेटा हमको एशिया रे भी सेम टेम्परेचर मिलु छै एठी हेंस एठी कोन हला आइसोबार एठी ऊपर को मूव कला जदी आइसोबार ऊपर को मूव कला ताहले आउ गुटे जिंस भी मूव करिवो जोटा हला ITCZ मु कहितली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ठीक अछि लेट्स से दिस इज योर 0 डिग्रीज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कोन थिला गोटे जोन जोटी की बहुत अधिका लो प्रेशर थिला सेति पई 30 डिग्रीज रु कोन होतला सेठी की विंड फ्लो करथिला यस और नो ITCZ कोन होतला 30 डिग्रीज रु 0 डिग्रीज को विंड मूव फ्लो करथिला यस और नो इक्वेटर पाखरे कारण इक्वेटर पाखरे लो प्रेशर थिला 30 डिग्रीज पाखरे हाई प्रेशर थिला यस एटा समस्या क्लियर थिला सेतो बेले Yes, sir. Yes, sir. ठीक अछि तो एबे देखंतु एबे कोन हला जस्ट एठी हमर 30 डिग्रीज रे सॉरी 0 डिग्रीज रे जो हीट ता थिला सेईटा एबे कोडी के ट्रांसफर हे जाई छी कोन तो कोडी ट्रांसफर हे जाई छी सेई हीट ता एई एरिया रे जो हीट ता रहिबा कथा सेटा एबे कोडी ट्रांसफर 30 हे degree जाई को पड़े 30 30 degree डिग्रीज को पळै छी वेरी गुड तो एबे जे तळे सेटा 30 डिग्रीज को पळै छी एबे जे तळे सेटा 30 डिग्रीज को पळै छी टेल मी जो विंड आसीबो आमे कोन जानचे ITCZ एटा एबे हमर ITCZ हे गला एटा एबे हमर दिस इज आवर ITCZ दिस बेल्ट इज आवर ITCZ नाउ व्हाई बिकॉज़ ड्यू टू हीट द प्रेशर बेल्ट हैज शिफ्टेड टू द नॉर्थ एठी जो कम हीट अछि सेति पई आ एठी अधिका हीट अछि सेति पई प्रेशर बेल्ट हैज शिफ्टेड टू द नॉर्थ अबिका मते कोंतु विंड ता कोडी कन्वर्ज होबो अबिका विंड ता कोडी कन्वर्ज होबो विंड ता sir, आसी 30 की degree. यस 30 डिग्रीज पाखरे आसी केबे कन्वर्ज होबो एठी आसी की विंड एबे कन्वर्ज होबो एठी आसी कन्वर्ज होबो सो वी हैव अ न्यू ITCZ एटा समस्त को बुझा गला एवरीवन इज क्लियर विथ दिस एई पार्ट ता क्लियर हे गले मॉनसून इजीली क्लियर हे जिवो सेट पे पचारछि क्लियर एवरीवन कार Yes, sir. डाउट Yes, sir. ओके वेरी गुड so let's move ahead now what Fawn said that due to the heating of the Asian landmass the ITCZ shifts to around 27 to 30 degrees the ITCZ over Asia the ITCZ shifts to 27 to 30 degrees in Asia তাহলে কোন হবে এবে দেখুন এবে উইন্ড আসিলা ওকে from 30 degrees let's say this is your 30 degrees these are the winds এই উইন্ডটা এবে আসছে ঠিক আছে উইন্ডটা এবে আসছে এটি আসিলা রাইট অবিকা ক্রস করবিও ইকুয়েটর তো উইন্ডটা ইয়ার্ড ଯିବ রাইট উইন্ডটা ইয়ার্ড ଯିବ ক্রস করিকি ইকুয়েটর yes or no উইন্ডটা ক্রস করিকি ইয়ার্ড ଯିବ রাইট আসুচি কোউঠু উইন্ডটা আসছে No, हमर sir. साउथ ईस्ट रु আসছে wind jiba kotha yade but wind will not go in that direction rather the wind will move to this direction kahi ki kahibe eta what is the Cor- reason for that Coriolis. yes due to Coriolis force se jo wind ta ଆପଣଙ୍କର 30 degrees ଆସୁଛି when it reaches 0 degrees ମାନେ equator ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ଇକ୍वेଟର ରେ in the southern hemisphere the Coriolis force deflects the moving object to its left तो सेति पई ए विंड ता कोन हला एठु ओरिजिन हला लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हला एठु ओरिजिन हला लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हला एठु ओरिजिन हला लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हला और लेफ्ट ही चली जंदे से माने इक्वेटर जाए किंतु हमें कोन जानि छे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंड क्वारे डिफ्लेक्ट हुए टू इट्स राइट
जेमती से माने इक्वेटर क्रॉस करिवे से विंड कुआडे मूव करिवो टू इट्स राइट ओके सो एबे मते कहंतु आपण माने समस्त बुझी गले काहे कि विंड इज कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन even though we have trade winds in this area which is easterlies, the monsoonal winds are westerlies in summers. Is everyone clear with this? Yes, sir. Okay, fine. So this was the concept given by Dr. Flon. Okay, this was the concept given by Dr. Flon, where he said as the ITCZ is shifting, so that's the reason why we have that's the reason why the wind is deflecting to the west as it crosses the equator. Okay. So it was like shifting of pressure belts and due to this the wind just a second. Due to this, the pressure belts, that is the ITCZ, shifts to around 30 degrees latitude. The wind coming from the south of equator gets deflected and becomes westerlies as it crosses the equator to converge in 30 degrees north. Okay, I hope this is clear. So एटा जतले कुआ हला समसे बुझी गले खुशी हे गले ओके फाइन दिस इज अ ग्रेट थ्योरी आउ एथुर हमको बुझा जाउची व्हाई द विंड इज साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन ओके बट आफ्टर दिस आल्सो देयर वाज सम प्रॉब्लम्स दैट इज people did not understand what is the reason for fluctuation in the monsoon. Monsoon काहे केते fluctuation होउची जो monsoon र intensity अछि सेटा काहे केते problem माने काहे कि एते vary करूची monsoonal breaks होउची काहे कि होउची तो से सबु भी problem थिला ओके ता ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग रे बहुत गुडे problem थिला तो सेथि पई नेक्स्ट कौन करा हला जस्ट अ सेकंड new theories were developed which is cumulatively known as monex कौन monsoonal expedition okay एटा globally meteorologist माने different countries जो जाई की experiment कले regarding why the monsoon is fluctuating so much and what is the reason for it. So those theories are known as they are combined and it is known as monex. So the first theory of it is तार जो first reason दिया आला that was the role of Tibetan plateau. The role of Tibetan plateau. Okay, so what was the role of Tibetan plateau here? It our third. Just a second. It our third theory. Okay, what was the role of the Tibetan plateau? Let's discuss that.
आमर एठी जो टिबेटन प्लेट्यू अछि एठी कोन हुए जो समर रे एठी बहुत अधिका एठी आपण देखा होतबो एटा एठी बहुत अधिका हीट टिबेट प्लेट्यू रे बहुत अधिका ड्यू टू लार्ज लैंड मास एठी बहुत अधिका हीटेड अप हे जाय टिबेटन प्लेट्यू टा बहुत अधिका हीटेड अप हे जाय राइट सो जेतले हीट हबो तार कोन हबो ऑब्वियसली हीट हेले एयर एक्सपैंड करिवो लाइटर हबो आउ एयर टा कोन करिवो अपर एटमॉस्फेयर को राइज करिवो यस एटा समसे जानि चंती कि एयर टा एटा अपर एटमॉस्फेयर ओके अपर एटमॉस्फेयर को राइज करिवो तो जेतले एयर टा अपर एटमॉस्फेयर को राइज करिवो तापर कोन हबो एटा गोटे छोटो थ्योरी जोटा कि म आपन को एबे कहि दूची कि एबे शॉर्ट रे कहूची रीजन दउनी खाली एति के एबे जानंतु कि जतो बळे एयर ग्राउंड सरफेस रे एयर जतो कन्वर्ज करे अपर एटमॉस्फेयर रे एयर कोन करिवो डाइवर्ज करिवो ओके आउ जतो बळे अपर एटमॉस्फेयर रे एयर कन्वर्ज करे ग्राउंड सरफेस रे कोन होबो एयर डाइवर्ज करे ओके सिंपल एग्जांपल आपण भाबंतु हमरो इक्वेटर रे ठीक अछि 0 डिग्रीज रे सेठी एयर कन्वर्ज हुए कि डाइवर्ज हुए इक्वेटर रे कन्वर्ज एयर Convert. कन्वर्ज हुए किंतु इक्वेटर रे अपर एटमॉस्फेयर एयर कोन हुए Diverse. डाइवर्ज हुए 230 डिग्रीज राइट 30 डिग्रीज को डाइवर्ज हुए आउ सेठी जाई कि डिसेंड करे सेही कांसेप्ट रु एबे खाली कोरिलेशन करिक मन रखि दियंतु कारण एटा मु डिटेल रे बे आउ अधिक कहि परिबिनी सो जदि तळे लो प्रेशर थिबो लो प्रेशर थिले कोन होबो विंड ऊपर को राइज करके डाइवर्ज करिवो आउ फर्दर आसी के विंड कोन हेबे पाखरे जो हाई प्रेशर थिबो सेठु आसी कन्वर्ज होबो सिमिलरली जोठी आपनकर लेट्स से तळे हाई प्रेशर अछि सेठी कोन हे ऊपर विंड कन्वर्ज हुए आ तळे आसी डाइवर्ज हुए ए कांसेप्ट टा टिके मन रखंतु राइट सो एबे देखंतु एटी टिबेटन प्लेट्यू रे कोन होउची बहुत अधिका हीट होउची काहे कि बहुत बड़ लार्ज लैंड मास अछि समर हीट हे जाय हीट हेले कोन होबो एटी लो प्रेशर रे विंड विल राइज एंड इन द अपर एटमॉस्फेयर ताले एठी जदी हां आ गोटे जिंस एठी भाबंतु जते कन्वर्ज होची लो प्रेशर होची ऊपरे जतबळे विंड टा ए सब एठी जो ग्राउंड सरफेस जो विंड थला से सब विंड कोन हला ऊपर को राइज कला ऊपर राइज करिकी एठी एक्युमुलेट हला तो एठी कोन होबो हाई प्रेशर होबो कि लो प्रेशर होबो अपर एटमॉस्फेयर रे High. एठी हाई प्रेशर होबो वेरी गुड सिमिलरली जदी अपर एटमॉस्फेयर रु विंड तळ को कन्वर्ज हे जाउची ताले अपर एटमॉस्फेयर एठी कोन होबो लो प्रेशर कारण अपर एटमॉस्फेयर विंड कोन होची तळ को पळे आछी तो ऊपरे आउ बेसी विंड रहिलानी एयर प्रेशर बेसी रहिलानी तो अपर एटमॉस्फेयर एठी कोन होबो लो प्रेशर एटा अपर एटमॉस्फेयर को हम कहूची तो ता माने जदी हम पाखरे तळे गोटे लो प्रेशर अछि देन इट्स ऑब्वियस दैट ऊपर गोटे हाई प्रेशर हो आउ जदी तळे गोटे हाई प्रेशर अछि देन इट्स ऑब्वियस दैट ऊपर गोटे लो प्रेशर हो क्लियर एवरीवन क्लियर ए जिंसटा Yes, sir. ओके फाइन सो एबे देखंतु तळे जदी एठी लो प्रेशर अछि एबे कोन हला विंड राइज कला ताले ऊपर एठी कोन होबो हाई प्रेशर होबो यस और नो तो Yes. आउ तळे ऊपर जे हाई प्रेशर होबो से विंड कोन होबो ऊपर कोन होबो डाइवर्ज होबो राइट एबे एतिक मन रखंतु ठीक अछि एबे एतिक मन रखंतु कि टिबेटियन प्लेट्यू रे हमर कोन होबो लो प्रेशर तो जेतले टिबेटियन प्लेट्यू रे लो प्रेशर होची ऊपर को से विंड राइज करची और से विंड राइज करके ऊपर कोन होची हाई प्रेशर होची सिमिलरली जदी एठी लैंड मास रे हमर अधिका हीट हे कि लो प्रेशर होची ओशन रे आमे जानि छै कि ओशन और सी विल बी रिलेटिवली कूलर राइट तो हमर मॉरिशस पाखरे गोटे आइलैंड अछि मैस्करिन कहि कि सेठी कोन थाए सेठी हमर हाई प्रेशर थाए काहे कि जेमति कहितली रिलेटिवली ओशन रे कोन होवे हमर हाई प्रेशर हुए और लैंड रे हमर कोन होवे लो प्रेशर हुए तो समर रे लैंड ऊपर as it is absorbing more heat it is there is a low pressure आउ ओशन रे हमर हाई प्रेशर हुए तो एठी कोन हला लो प्रेशर रु विंड ऊपर को राइज कला ऊपर राइज करके एठी हाई प्रेशर रे एठी ऊपर हाई प्रेशर अछि आउ एठी तळे हाई प्रेशर अछि राइट तो ऊपर एठी कोन थिबो लो ए जगह प्रेशर ऊपर कोन थिबो लो प्रेशर थिबो सो
आउ आमे जानि जे कि विंड कोठु मूव करे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यस और नो wind move करे from high pressure to low pressure. So here we will see that गोटे जेट स्ट्रीम एटी इंड्यूस हबो जेट स्ट्रीम एबे जेट स्ट्रीम किछु ने बट एन अपर एटमॉस्फेरिक wind. Okay, ठीक अछि अपर एटमॉस्फेरिक wind. For the time being just remember this that jet stream is an upper atmospheric wind. तो हमर एठी कोन हला लो प्रेशर रे ऊपर जे कि हाई प्रेशर हला आउ एठी मैस्कुलिन हाई रे ग्राउंड रे जतल हाई प्रेशर अछि अपर एटमॉस्फेयर हमर लो प्रेशर अछि. So the wind will move from high pressure to low pressure and this wind will descend at masculine high. A wind descend kala masculine high रे एठी हाई प्रेशर हला. ओके सो एटा हमर अपर एटमॉस्फेयर हला हाई प्रेशर ओवर द टिबेटियन प्लेट्यू आउ लो प्रेशर ओवर द मैस्कुलिन हाई. अबिका ग्राउंड रे देखंतु ग्राउंड रे मैस्कुलिन हाई रे हाई प्रेशर अछि आउ टिबेटियन प्लेट्यू रे लो प्रेशर अछि राइट. सो विंड कोठु मूव करिवो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर टू द टिबेटियन प्लेट्यू राइट. सो ए जो विंड ता गला दिस इज द मॉनसूनल विंड. मु कोन कहली टिबेट रे बहुत अधिक गरम होउची तो सेठी कोन हला we have a low pressure in the upper atmosphere we have a high pressure masculine high we have a high pressure at the ground surface. So in the upper atmosphere we have a low pressure. So the wind and the upper atmosphere is moving from high pressure to low pressure and it is converging at masculine high, and this wind is moving towards the low pressure of the Tibetan plateau at the ground, and this wind is nothing but a monsoonal wind, and it is while it is moving it is taking moisture along with it from the sea and it is reaching the Indian landmass and as it reaches the landmass then what will happen, it will precipitate. Okay, eta overall concept ta बुझा गला. आउ भीतर आ टेक्निकलिटीज अछि मु कहबी किंतु ओवरऑल कांसेप्ट बुझा गला. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so गोटे जिंस देखंतु एठी कोन हुए हमर हम जेट स्ट्रीम डिटेल को जिबानी. जेट स्ट्रीम आसीबनी एग्जाम रे कारण इंडियन ज्योग्राफी रे अति बेसी हमर खाली से ट्रॉपिकल हिस्ट्री जेट स्ट्रीम ताही अछि तो सेटा भी मानसून संगे ही आसीबो. ठीक अछि तो कोन हबो हमर गोटे जेट स्ट्रीम फ्लो करे अपर एटमॉस्फेयर रे दैट इज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. Okay, that is the subtropical westerly jet stream. ये जो subtropical westerly jet stream से actually गोटे बैंड है क्या से आउ एठी कोन हुए जो अफगानिस्तान पाखरे जतले हिमालय स्टार्ट होबो मींस नॉट एक्जेक्टली हिमालय हिमकुज वगैरह जतले माउंटेन स्टार्ट हुए तो ई जेट स्ट्रीम कोन करे ई जेट स्ट्रीम दीटा पार्ट रे डिवाइड हो जाए. गोटे हिमालय रा साउथ रु जाए आ गोटे हिमालय रा नॉर्थ रु जाए and beyond Himalayas again they merge with each other आउ गोटे बैंड है कि मूव करंदी. एठी जेमती गोटे बैंड है कि मूव करथले सेमती सेन गोटे बैंड है कि मूव करबे. ओके बट हिमालय रे कोन सेन दीटा पार्ट डिवाइड हो जाते. तो से टिबेटियन प्लेट्यू ऊपर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा मूव करू थाए. ओके कंटीन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर मूव करूथियो किंतु एबे देखंतु कोन होउची मु कहली कि एठी जो लो प्रेशर होउची टिबेट ऊपर तो से लो प्रेशर कोन होउची बहुत इंटेंस लो प्रेशर होउची तो सेथि पई एठी कोन होउची कन्वेक्शन होउची राइट. कन्वेक्शन होउची. डोंट यू थिंक दिस convection current will act as a obstruction to the wind that is to the subtropical jet stream winds. ए जो wind जो convection टा ऊपर को होई कि जाउची आउ एटा बहुत स्ट्रांग करंट एटा गोटा ऑब्स्ट्रक्शन हबो कि नहीं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को. यस और नो Yes, sir. बुझा गला मु कोन कहूची एठू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो करे किंतु हमर एबे जो लो प्रेशर होउची समर रे ता पई एई पार्ट रे कोन होउची कन्वेक्शन होउची आ विंड ऊपर को करंट ऊपर को फ्लो करची. जो करंट फ्लो करची सेथि पई हमर ए जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आछी से कोन हबो से हमर एठी ऑब्स्ट्रक्ट हबो. यस और नो बुझा होउची पार्ट टा. Yes, sir. रिप्लाई ओके फाइन. तो सेथि पई जेतले मानसून आमे देखू गोटे वे टू जानिबा कि यस मानसून इज नियर बाय और मानसून इज अप्रोचिंग if we see that this subtropical jet stream has disappeared over the
southern region of Himalayas. जदि southern region of Himalaya पाखरे जदि हमरो एई पार्ट जदि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जदि हमरो the subtropical jet stream is no more seen over the Tibetan plateau, then it is understood that monsoon is approaching. Okay? এটা খালি ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଟିବେଟିଆନ ପ୍ଲାଟୁରେ ଅଧିକ ଲୋ ପ୍ରେସର ହୁଏ ଦ କରେଣ୍ଟ ରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସବଟ୍ରପିକାଲ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱିଡ୍ରଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟିବେଟିଆନ ରିଜିଅନ ଓକେ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏତିକି ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା कि कौन टिबेटियन प्लाटूर रोल कौन बाकी आम नेक्स्ट क्लास रे एटू कंटिन्यू करिया ओके 9:26 हेगलानी आई आल्सो डिड नॉट गिव यू अ ब्रेक सो नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिया एबे जाय मु जहा कहली मॉनसून समस्त बुझा गला Yes, sir. ओके फाइन सो नेक्स्ट क्लास we'll discuss monsoon further आ monsoon end करिया मु खाली गोटे थर कहि दुची नेक्स्ट क्लास कोन करिया आमे गोटे आगो तो monsoon end करिवा तापरे monsoon परे आमे cyclones पढिवा cyclones परे मु शॉर्ट रे आपन को खाली इंडियन क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ता शॉर्ट रे कहिबी सेटा मु 15 मिनिट्स पाखा के खाली कहि देबी ए रीजन एटा एग्जाम रास्ता अपन लिखि देबे monsoon cyclone सेटा कहिबी आउ हाफ एन आवर मु जोटा कहितली कि रिवर आउ आइलैंड रो सेटा मु आपन संगे डिस्कस करिवि ओके तो सेठी हमर कोन हबो जो फिजिकल ज्योग्राफी अछि से पार्ट टा कंप्लीट हबो एंड देन विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी दैट इज इंडस्ट्री okay clear everyone Yes, sir. okay fine thank you everyone so I am ending the class here we'll meet in the next class good night Thank you, sir. Good night, sir. good night Thank you. thank you